The second day of the monsoon session was completely washed out due to opposition protests and repeated disruptions over various issues. Namaskar and welcome to Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. You're watching House Highlights, the program where we bring you a comprehensive overview of the day's proceedings from both the Houses of Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, for the better understanding of the proceedings. Before we delve into the details, let us begin with the headlines. Proceedings in both Houses of Parliament disrupted multiple times due to repeated opposition protests. Opposition continues to demand immediate discussion on Operation Sindoor. Lok Sabha Speaker appeals to members to cooperate in ensuring the smooth functioning of the House. Government accuses the opposition of adopting double standards over the ongoing deadlock in Parliament. Minister of Parliamentary Affairs states the government is ready for discussion, but disruptions causing the nation losses amounting to crores of rupees. And Rajya Sabha formally informed about the resignation of Vice President and Chairman of the Upper House, Jagdeep Dhankar. Notification issued by the Ministry of Home Affairs placed before the House says that Dhankar decided to step down due to health reasons. Let us now take a look at what took place in the lower house on the second day of the monsoon session. Soon as proceedings began in the Lok Sabha on Tuesday, the Speaker instructed for the commencement of the question hour. The Speaker even announced the question number and named the member to raise the question. प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद बोलना है पेपर हरीश चंद मीणा. On Tuesdays, questions asked in the Lok Sabha also pertain to the Ministry of Agriculture. The Agriculture Minister, Shivraj Singh Chauhan, informed the House that out of the 20 questions selected for oral answers, 11 were related to the farming sector. He therefore appealed to the sloganeering opposition members to allow the House to function smoothly so that important issues concerning the farming community could be discussed and addressed on the floor of the House. मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है. 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे. हम जवाब देने को तैयार हैं. हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है. कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए. मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय. Following the Agriculture Minister's appeal, the Speaker too made efforts to restore order in the House. He reminded members that bringing placards into the House was inappropriate and urged the sloganeering members to return to their seats and allow the proceedings to continue. However, as his appeal failed to calm the situation, the Lok Sabha was initially adjourned till 12 noon. आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है. आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे. ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है. मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें. माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है. आप सदन की मर्यादा को बना करके
सख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Soon as the House reassembled at 12 noon, Jagdambika Pal, who was in the chair, informed the members that the Speaker had rejected all adjournment motions, following which important papers were laid on the table of the Lok Sabha. The papers tabled on Tuesday included those from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Home Affairs, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Ministry of Rural Development. The Secretary General Lok Sabha reported the House on a message from Rajya Sabha regarding the bills of Lading Bill 2025. He further informed the House on the assent given by the President on 16 bills passed by the Houses of Parliament during the 4th session of 18th Lok Sabha. These bills included Appropriation Bill 2025, Appropriation Number 2 Bill 2025, the Manipur Appropriation Bill 2025, Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025, the Finance Bill 2025, the Appropriation Number 3 Bill 2025, the Railways Amendment Bill 2025, the Disaster Management Amendment Bill 2025, the Banking Laws Amendment Bill 2025, and the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill 2025. Member Magunta Srinivasalu Reddy tabled the report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs. The fifth report was on the subject Regional Rapid Transit System and the role of NCRTC. Saptagiri Sankar Ulaka then tabled the report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj. The 10th report focused on the functioning of the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj pertaining to the Department of Rural Development. Subsequently, Dr. Virendra Kumar moved a motion for election of 2 members to the Rehabilitation Council of India. According to the motion, members of the House were to elect 2 representatives from among themselves to serve on the council for a term of 2 years. Dr. Virendra Kumar also brought another motion for the election of 2 members to the Central Advisory Board on Disability. Here again, 2 members from the House were to be elected to serve on the board. Both motions were adopted through voice vote. The proceedings of the House continued to be disrupted by members of the opposition parties. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal tried to assure the opposition that the government was ready to discuss all issues provided the House was allowed to function smoothly. However, his assurance had little effect. Let us now listen to how MOS Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal attempted to persuade the opposition members to allow the House to function properly. मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय पे जिसमें आप रूल्स के तहत अनुमति देंगे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट में जाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार हैं। As Bedlam continued to hinder the progress of the proceedings in the lower house, Jagdambika Pal, who was in the chair, was compelled to adjourn the House. This marked the second adjournment of the Lok Sabha on Tuesday, this time till 2 p.m. क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें, आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The House reassembled at 2 p.m. However, opposition members continued to demand discussions on various issues. Dilip Saikia, who was in the chair, repeatedly urged the opposition members to take their seats and allow the House to function smoothly.
सदन का समय को आप उपयोग कीजिए। नहीं, प्लीज 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 ऐसे प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज 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 सदन चलने दीजिए। सदन का समय सबका है, प्लीज सदन को चलने दीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए, प्लीज 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 बी सीटेड, प्लीज 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 बी सीटेड। सभी आपका सभी मुद्दे का ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में पूरा चर्चा होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज प्लीज सदन में प्लीज बी सीटेड, प्लीज 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 बी सीटेड। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ऐसे प्लीज बी सीटेड। सदन चलाने में सब लोग मदद कीजिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। In a last-ditch effort to revive the proceedings of the Lok Sabha on Tuesday, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju also appealed to the opposition to allow the House to function. In his address, he reiterated that the government was ready to discuss all issues, including Operation Sindoor. However, the appeal had little impact. Let us now listen to the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju's appeal. ये हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। After repeated appeals and continued intransigence from the opposition, the lower house was eventually adjourned for the day. The Lok Sabha will reconvene at 11 a.m. on Wednesday. देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है, हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Let us now take a look at what took place on Tuesday in the Rajya Sabha.
On Tuesday, proceedings of the Rajya Sabha were repeatedly disrupted due to the opposition protests demanding an immediate debate on Pahalgam terrorist attack and Operation Sindoor. Eventually, the House was adjourned for the entire day. When the House convened at 11 a.m., birthday wishes were extended to member S. Niranjan Reddy. Honorable members, I am pleased to convey birthday wishes to Sri S. Niranjan Reddy, whose birthday is today. Honorable members, on behalf of all of us, I wish Sri Niranjan Reddy a very happy birthday and many more years of good health. Following this, Deputy Chairman Harivansh asked important official papers from various ministries as well as reports of department-related parliamentary committees to be tabled in the House. Papers to be laid on the table, Sri Pratap Rao Jadhav. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2, class B of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Finance. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, Srimati Geeta Urf Chandra Prabha. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ. The Deputy Chairman also informed the House about the rejection of notices submitted under Rule 267. Announcement by the Chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. Announcement regarding 267. Honorable members, 12 notices have been received under Rule 267. The notices of Dr. Syed Nasir Hussain, Sri Akhilesh Prasad Singh, Srimati Ranjit Ranjan, Sri Neeraj Dangi, Sri Ashok Singh, Sri Sanjay Singh, Sri Saket Gokhale, Sri Manoj Kumar Jha, Sri Ramji Lal Suman and Sri P.P. Sunir have demanded discussion over the concerns arising out of a special intensive revision of electoral rolls undertaken by the Election Commission in Bihar. The notice of Trichu Siva demands discussion over the Union government's inordinate delay in publishing ASI Kizadi report and its implication for scientific transparency. The notice of Sri Sandosh Kumar P. demands discussion over the unprecedented and unexpected resignation of the Honorable Chairman Rajya Sabha. Honorable members may recall the detailed rulings on Rule 267 imparted by the Chair on 8th December 2022 and 19th December 2022. The same have been reiterated a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Chair, the same are declined. Please. The Deputy Chairman then attempted to initiate zero hour. However, Congress and several opposition members began raising slogans demanding an immediate discussion on Operation Sindoor. Deputy Chairman Harivansh appealed to the members to allow the House to function smoothly. With the disruption continuing, the proceedings were adjourned till 12 noon. Now it's matters raised with permission. Please. Sri Vaiko, please take chair, please. Sri Vaiko, no, please take chair. Sri Vaiko, Sri Mayank Kumar Nayak, demand for inclusion of other rural areas of Mehsana district in the rural mission. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताइए गांव का हो
इसके लिए रूरल लागू किए। मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रूरबन के अंदर में बैसरा की स्वीकृत किया गया नेटवर्क। When the House reassembled at 12 noon, formal information was presented regarding the resignation of Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar. Presiding officer Ghanshyam Tiwari informed the House of the notification issued by the Ministry of Home Affairs on 22nd of July 2025. प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। The Ministry of Home Affairs word notification at 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. Question. Shri Harsh Mahajan. Question number 16, sir. माननीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जोशी. Statement is laid on the table of the House, sir. First supplementary is हरीश महाजन, हर्ष महाजन. सर, मैं माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितनी हम बिजली पैदा कर रहे हैं। क्या वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम और माननीय सदस्यगण कृपया बैठिए। आप कृपया प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। श्री सर्वानंद सोनोवाल to move a motion for consideration of the carriage of goods by sea bill 2025. Shri Sarvanand Sonowal. Please go back to your seats. Please. आप अपनी सीट पर वापस जाएं. Please, no. Please. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 23rd July 2025. That is all in this bulletin. We will be tracking the proceedings of the Parliament throughout the monsoon session and keep you abreast of all the important happenings in our program, House Highlights. Till we meet next time, thanks for time.